So in last class, we were discussing socio-religious reform movement. Okay. Again, we are going to discuss the socio-religious reform movement in Bombay. Okay. Then we'll discuss in the South India. Again, we are going to discuss these things in detail. Okay. Now, in Bombay, what are the issues that we need to understand? Bombay, Bombay reason. We have already discussed reforms issues in Bengal, and that was the Gujarat. epicenter. Okay, this was the most important center. Then we have discussed another topic, that is Gujarat region. It is important for Swami Dayanand Saraswati and Arya Samaj. Okay, so both these two topics are important. Okay, questions are also asked on the Arya Samaj movement. So you will write very simply that started in 1875 and the efforts of Swami Dayanand Saraswati. You will write here along with the Suddhi movement and the simple form of marriages. It was more revivalist in nature. So instead of writing it as only revivalist, you will write what? It was more revivalist, okay, in nature, and reformist also, because they also tried to promote the education, Western education, English education, Anglo-Vedic schools, DAV schools, all this we have discussed. Now this part Bombay. I told you that whatever the development that will take place in Bengal are going to motivate or encourage other parts in India. Okay, it means that in other parts also the influence of Bengal can be seen. So Bengal was very much important. Okay, when we talk about the promotion of socio-economic awareness among the Indians in India, so its reflection can be seen in Bombay also, Maharashtra region also, and in Bengal the most pioneer organization was Brahma Samaj. We all know this, 1828. So obviously the activities of Brahma Samaj will find its expansion in Bombay also. That is one of the most important point here, that Brahma Samaj activities were, okay, Brahma Samaj activities, okay, the extension of Brahma Samaj activities in Bombay. That is one of the most important point. Okay, extension of Brahma Samaj activities in Bombay. But here we have another organization doing the same thing. And the name of this Prarthana. organization is Prarthana Samaj. Right? This is again a prelims question. पूछा भी गया है इसको. All these are the important prelims question. Prarthana Samaj. Prarthana Samaj. Clear? And who were the founders of this Prarthana Samaj? ये भी पूछा गया. It was also asked. The year was 1867. Year was 1867. Sorry, 1867. Year was 1867. Year is also important. Why it is important? Look, the year in Bengal, 1828. And the year it started in Bombay is 1867. So there is a gap of how many years? 38 Almost 40 books. years. Okay. So this is the most important thing. So Prarthana Samaj, right? The name of the founder. Okay. So here, one name is very important name, and that is Kesav Chandra Sen. We all know that Kesav Chandra Sen was also associated with Brahma Samaj in Bengal. So this name is very important. That is Kesav Chandra Sen. Okay. Then there are some other leaders who are the founders of this. One name is M.G. Ranade. We are also familiar with this person, M.G. Ranade. He was one of the earliest economic critic also, right? Another popular name is R.G. Bhandarkar. R.G. Bhandarkar. This is another popular name. R.G. Bhandarkar. Okay. And N.G. Chandavarkar. Okay. But these three names are the most important. N.G. Chandavarkar. N.G. Chandavarkar. This is also an important name. But these three names are the most important names. Okay. Out of these three, these two are the most important name. Keshav Chand Sen is the most important name. Clear? So what will be the issues of reforms that will be addressed by Prarthana Samaj? कौन से issues को address करेगा? So same issues that were addressed by the Brahma Samaj previously. Very simple. Clear? Same issues. But in Bombay, we see a change. Okay. And what is that change? Here, the main focus is, okay,
to bring reforms in the life and conditions of the Shudras. That means upliftment of the lower classes is one of the focused agenda here. Subordination of women. This task was also okay one of the primary agenda. तो बंगाल में जैसे हिंदू सोसाइटी के स्टैब्लिश स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स लाना था, ठीक है, तो बेंगो इन बॉम्बे, ओके, topic will be the same, but here the main focus will be bringing reforms in the life conditions of Shudras, upliftment of the lower Varna of the society. Okay. And you can say that women also. Okay. So read this. In Bombay, the main focus, this you must know, Bombay. Main focus kya hai? What is the main focus here? So main focus is upliftment of upliftment of okay Shudras, upliftment of Shudras. Okay, that is also known as lower caste movements. Clear? They will fight for their right, for the equality. That is one of the most primary agenda. That is important here. And the second important part was, okay, you can say that improvement in the conditions of the women. Improvement in the conditions of women. Clear? These are two primary agenda in Bombay. So that is the most important thing that we must know. Clear? Issues will be the same. So I'm not entering into the issues. I have already discussed those issues. Now here another important name is MG Ranade. So let's discuss something about MG Ranade for Prelims perspective. What could be important here? MG Ranade. We already know that MG Ranade is one of the early economic critique of British rule in India. He was one of the early economic critique of British rule in India. Right? The second important point about him is that, okay, MG Ranade is also one of the founder members of Pune Sarvajanik Sabha. Read this point. He was also one of the founder members of Pune Sarvajanik Sabha. He was also one of the founder members of the Pune Sarvajanik Sabha. Got it? And the next most important thing about him is that Pune Sarvajanik Sabha, year you can write 1870. और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रार्थना समाज. Year is what? 1867. He was also one of the founder members in Prarthana Samaj. प्रार्थना समाज में भी थे. Year was 1867. ठीक है? Year was 1867. Now the next important point about him is that, right, year 1887 he founded INSC. This question has also been asked in PT, UPSC. Today's class will be a little bit more factual. ठीक है ना? I will come to the concept when I will discuss Aligarh movement. तो अभी तो facts चलेंगे. These are important facts. 1887 INSC. And what is INSC? Right, INSC is Indian National Social Conference. Indian National Social Conference. Indian National Social Conference. And what is the concept here? Let's discuss. This is also important for prelims. Already a prelims question. INSC, Indian National Social Conference. ठीक है? तो देखो, Indian National Congress was formed in which year? We all know. 1885. 1885 is the year Indian National Congress was formed. Now, Indian National Congress was what? Pan India political party, all class party, all religion party, right? So, INC was Pan India political party, all India political party. It is a all class party, all class party. It is all religion party. It was representative all India. But what the British policy intended to do? British policy was trying to label Indian National Congress as a party of Hindus. Okay, that is dominated by Brahmins. ये तो British policy थी. Now, INC was very alert here. INC was knowing this thing. For example, if you are a political party, all India political party, so obviously the people will approach you that you should fight to bring social reforms, to bring socio-religious reforms in the society. Now, if INC will raise any particular agenda, what is the possibility?
अगर आईएनसी इफ इट विल रेज एनी पर्टिकुलर एजेंडा फ्रॉम इट्स ओन प्लेटफॉर्म that is related to socio-religious issues. I told you earlier that religious issues are very, okay, you can say that very sensitive. So INC knows the consequence. INC को consequence पता है. Yes, Akash, ask your question. No, no, no. I was just give about the answer of your question, but you are telling. ओके, तो अगर वॉइस ब्रेक होगा तो बताना आप लोग, ठीक है ना? ऐसे वाली क्लास में कई जगह वॉइस वो ऐसे हो चुका है। और मेरी क्लास में फिर से मैं बता रहा हूँ, आराम से बैठो, आप जो स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, डू इट, अपने से पढ़ते रहो। बट मैं अपनी क्लासेस में जो भी पढ़ाऊंगा, यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट्स इन द एग्जाम, ठीक है? तो क्लास की पेस के साथ बस क्लास में हिस्ट्री पढ़नी है, इसके बाद नहीं पढ़नी है, उसी को रिवाइज कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट। इसलिए हम आराम से चीजों को कवर करेंगे, राइट? नाउ व्हाट आई से हियर इज दैट आईएनसी वाज ऑल क्लास पार्टी, ऑल रीजन पार्टी। नाउ व्हाट विल हैपन if INC will raise any issue that is related to society, that is related to religion? अगर सोसाइटी से जुड़ा हुआ इशू है तो उसके पीछे कोई रिलीजियस बिलीफ है, गॉट इट? तो अगर आप उसको टच करोगे तो आसानी से ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको क्या प्रूव कर सकती है कि आप हिंदू पार्टी हो या एंटी हिंदू पार्टी हो, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। So it was a better idea that was suggested by whom? MG Ranade, that if we will make an auxiliary platform that is related to Indian National Congress, but it is a auxiliary platform, and this auxiliary platform will be used to raise socio-religious issues. Direct INC से ना उठा के हम क्या करें, एक ऑक्सिलरी प्लेटफॉर्म बना लें, ओके, एंड दैट विल बी यूज टू रेज द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इशू। सो दैट ऑक्सिलरी प्लेटफॉर्म वाज सेट अप इन विच ईयर? 1887। तो पहले तो कांग्रेस बनती है, फिर ये ऑक्सिलरी प्लेटफॉर्म बनता है। दिस ऑक्सिलरी प्लेटफॉर्म विल बी यूज टू रेज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इश्यूज ओनली। So that's why it is also called Socio Reform Cell of Indian National Congress. यही रीजन है कि इसको क्या कहते हैं, सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो यू कैन राइट हियर that it was an auxiliary platform of INC itself. It was an auxiliary platform of INC itself. It was an auxiliary platform of INC itself. ये INC का ही auxiliary platform है. It was an auxiliary platform of INC itself. Right. It was mainly used. It was mainly used to raise issues of socio-religious reforms. It was mainly used to raise the issues of socio-religious reform. So it is called Social Reform Cell of INC. Right? This. It is called also what? It is also called Social Reform Cell of INC, Indian National Congress. So this is one organization. Social Reform Cell of Indian National Congress. Got it, Vipin? It is very easy. It is also called Social Reform Cell of Indian National Congress. ठीक है, बहुत आसान है. Now, there is another important name, and this important name is important in the context because he was the political guru of Gandhi. The name was Gopal Krishna Gokhale. These are the, yes, important reformers from Bombay. Read this, Gopal Krishna Gokhale. He was the political guru of Gandhi. He was the political guru of Gandhi. We all know this. He is also an early economic nationalist. Gopal Krishna Gokhale was also an early economic nationalist. Okay. Now, what is the most important contribution here? Okay. So at this point, 1905, year is 1905. Gokhale did what? Gokhale led the foundation of Servants of India Society. That is one of the most important topic. Read this. Who was the founder of Servants of India Society? Servants of India Society. So the answer is Gokhale. Year is what? 1905. Okay, 1905. Gokhale. Servants of India Society. Year is what? 1905. Now, what was the purpose of this organization? Purpose of this organization. This is very interesting. Can you make guess what was the purpose of Servants of India Society? क्या होगा? Guess कर सकते हो? What To would be the serve the
to serve the society, helping the people in mm, the देखो daily work and देखो समझो, अब मैं कॉन्सेप्ट को रिलेट करता हूँ। यस आकाश प्लीज। Servants of India society, it can be address the issues of peasants, labor class, those people are downtrodden, to address their issues and to keep in front of the British administration. Obviously it will address all the issues of social religious reform, but what is the main purpose? मेन पर्पस देखो क्या है, अब आप कितनी आसानी से समझोगे। व्हाट वी नो, 1813 चार्टर, याद आया कुछ? क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू कम टू इंडिया। डू यू रिकॉल दिस इंफॉर्मेशन? yes, क्रिश्चियन sir, मिशनरीज allowed to come to India in the name of promoting what? Missionary activities. And what were the missionary activities? Providing health, providing education. These were education, the missionary activities. But actually, what they were doing, कर क्या रहे थे? In the name of promoting promoting Christianity. health and education, okay, what was the main agenda or hidden agenda? We can say main agenda or hidden agenda. तो main agenda था promotion of Christianity, right? Conversion to Christianity, promotion of Western culture, to make Indian good consumer of British products, ठीक है ना? यानी मेन पर्पस था टू सबऑर्डिनेट इंडिया कल्चरली ऑल्सो। पॉलिटिकली तो सबऑर्डिनेट कर ही लिया, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन, इफ यू विल प्रमोट द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन, क्रिश्चियनिटी, if the needs of Indian consumer will be similar to the British consumer needs, so what will happen? Cultural subjugation of India, cultural subjugation of India can be done. This was the intention. एक और बात है, whenever there were droughts and famines, we all know that the frequency and intensity of droughts and famines increased during this British Indian period. So whenever there will be droughts and famines, जब भी droughts and famines होंगे तो क्या होगा? British government, okay, was it providing humanitarian assistance and relief as it was expected? Yes or no? जितना एक्सपेक्टेशन था उतना था? नहीं। they were not willing to give full support or humanitarian relief to the Indian people, and that's why Indian people were suffering also. ठीक है? डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट से जो आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सेप्ट कर रहे हो वो नहीं मिल रहा था। नाउ व्हाट गोपाल कृष्ण गोखले सेज हियर, ही सेज दैट वी कैन आल्सो ट्रेन इंडियन पीपल फॉर मिशनरी एक्टिविटीज। गॉट इट? जो काम इंग्लैंड से आके ब्रिटिश लोग कर रहे हैं वो हम हिंदुस्तानी भी तो कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ट्रेन इंडियन पीपल फॉर द, दिस इज द आइडिया, मेन आइडिया, वी कैन ऑल्सो ट्रेन इंडियन पीपल फॉर मिशनरी एक्टिविटीज, वी कैन ऑल्सो ट्रेन। एंड हियर मिशनरी एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? ओके, वेस्टर्नाइजेशन खत्म, ठीक है, इंडियन वॉलंटियर्स होंगे, दे विल बी ट्रेन्ड इन मिशनरी एक्टिविटीज, गिविंग हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, उनको हेल्थ अवेयरनेस या फिर एजुकेशन के लिए, सो वी कैन ट्रेन okay Indian people for these missionary activities. That is the main idea. And not only we can train, but we can also do what? Okay, so we can also use these Indian volunteers to provide relief works or humanitarian assistance at the time of any disaster and famine. जो गवर्नमेंट का काम है अब हम वो खुद करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी सेंसिटिव नहीं है, गवर्नमेंट इज नॉट सेंसिटिव टू द केयर एंड नीड्स ऑफ इंडियन पीपल, तो वो काम हम खुद ही कर लेंगे। दिस इज द मेन आइडिया। कितना आसान है। अब याद रहेगा आपको, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू विल बिकम आईएएस यू विल बी सर्वेंट Servant. ऑफ इंडिया, दैट गॉट इट, ब्यूरोक्रेट्स। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया यहाँ पे एक वॉलंटियर मीनिंग है, ठीक है, कि वो काम हम खुद ही कर लेंगे। दैट इज द मेन पर्पस, बट ऑब्वियसली दिस ऑर्गेनाइजेशन विल एड्रेस द इश्यूज ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑल्सो, उसको भी एड्रेस करेंगे ही करेंगे। दिस विल हैपन, ओके। सो दिस इज वन इशू। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट इशू, राइट? नेक्स्ट नेम एन एम जोशी, राइट? नेक्स्ट नेम इज एन एम जोशी, that is Narayan Malhar Joshi. Now, with each personality, you are becoming familiar with the variety of tasks that is being done here. कुछ डाइवर्सिफिकेशन आया है बॉम्बे में,
ये डाइवर्सिफिकेशन ही तो है, अलग काम है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। एन एम जोशी, नारायण मल्हार जोशी, राइट, ओके। 1911, 1911, this is also very important information, that formation of social service league, formation of social service league in Bombay. All these facts are the important facts for your examination. Formation of social service league in Bombay, ठीक है। अब देखो नाम इसका क्या है, फिर से देखो, सोशल सर्विस लीग। इज इट सिमिलर टू द वर्क्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? Yes. Social service, yes, okay. So write this purpose. What is the purpose? To provide volunteer services, volunteer services, okay, offering help and support, humanitarian assistance, relief work during any disaster and famine, plus other missionary activities. This is the purpose. Social Service League. We will provide social service. Clear? And this is how we are trying to mitigate the effects of Christian missionaries. ये भी तो एक तरीका हो सकता है। 1813 से this is what 1911, 1905. It means more than 80 years. Christian missionaries 90 years are active in India. Now the people have started realizing कि जो काम हमें करना चाहिए वो काम बाहर वाला आके कर जा रहा है, तो कुछ तो फायदा लेगा ना वो, तो इससे बेटर है वो काम हम खुद ही कर लें। सोशल सर्विस लीग, this was formed. So all these are the volunteer organizations, and he also did what, right? He was also associated with AITUC, All India Trade Union Congress. I will discuss it later. When I will discuss socialism and communism in Indian national movement, I will discuss this. Okay. So you can write here that he was also associated with AITUC, All India Trade Union Congress. Clear? Got it? Okay. Now, the next important topic here is Gopal Krishna Gokhale kar liya na humne. Okay. Now, one of the most important personality here is MG Ranade. We have already done. Okay. Gopal Krishna Gokhale, right? Jyotiba Phule. That is an important personality. We cannot miss Jyotiba Phule here. Jyotiba Phule. Jyotiba Phule. One of the most important reformer. Okay. फूले, फूले वर्ड किससे बना है? फूल से. फूल मीन्स फ्लावर. Mali community. Okay, so he was related to that low caste Mali community. So he will fight for whom? Fight for the upliftment of the lower class. So फूले, फूले मीन्स ये फूल हो गया, फूल से हो गया फ्लावर, फ्लावर से हो गया माली कम्युनिटी. माली कम्युनिटी, तो इनका मेन फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस? ओके, upliftment of the Lower lower class. classes, upliftment of lower classes. This is the main focus. And the second point is upliftment of lower class. अच्छा देखो, if you are fighting for the upliftment of lower classes, are you fighting against the dominance of the priestly classes? Yes, बात तो एक ही हुई ना. Okay, so fighting against the dominance of priestly classes. This is also the point, that to fight against the dominance of priestly classes, went against the dominance of priestly classes. This is another important point. Okay, और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर क्लासेस, उसका सबसे बड़ा एक्सप्रेशन डिस्क्रिमिनेशन का क्या है? कि दे वर नॉट अलाउड टू बिकम द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम. Untouchability. एजुकेशन सबसे पहली चीज देखो, एजुकेशन आने के साथ जैसे ही आपके पास एजुकेशन आता है, ठीक है, सो द रोड्स आर ओपन. सारे एक्सप्लॉयटेशन, जैसे विमेन, देखो विमेन, व्हेन गर्ल्स विल गेट एजुकेशन, their subordination will be ended. Only solution is what? Education. And once when girls get education, okay, and when they walk with women, जब उनके parallel चलती है, so the people use another trick to stop girls from getting progress. For example, many a times you must have it. For example, as a male member of the society, ठीक है, अगर आप सिगरेट पी रहे हो, तो your friends, your parents will say that बेटा मत पियो, lungs खराब हो जाएगा. तो एज अ मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जब एक लड़का सिगरेट पीता है तो उसका लंग्स खराब होता है, लेकिन जब एक लड़की पीती है तो लोग कहते हैं कैरेक्टर खराब है. भाई उसका भी लंग्स ही खराब होगा, कैरेक्टर थोड़ी ना खराब होगा सिगरेट पी लेने से.
तो अब आप सोचो कितनी बड़ी चीज है जो रोज हम देखते हैं। इफ अ गर्ल, अगर एक लड़की सिगरेट पी रही है तो लोग कहते हैं अरे अच्छी लड़की नहीं है, कैरेक्टर खराब है। लड़का पी रहा है तो उसका लंग्स खराब होगा, लड़की पिएगी तो उसका कैरेक्टर खराब होगा। छोटी छोटी जगहों पे आपको दिखेगा कि कैसे सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन को इंश्योर किया गया। सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, दोनों के लंग्स खराब हो गए, लेकिन मुद्दा क्या है? लड़के ने पिया तो लंग्स खराब, लड़की ने पिया तो कैरेक्टर खराब। ये क्या है डिस्क्रिमिनेशन। तो इट इज विजिबल इन मेनी एस्पेक्ट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि दोज हु विल फाइट अगेंस्ट द दिस एट्रोसिटी अगेंस्ट द लोअर क्लासेस, तो वो साथ साथ वुमेन की भी बात करेंगे, बिकॉज इन हिस्ट्री सबऑर्डिनेशन ऑफ शूद्रास एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, दोनों के साथ एक तरह से क्या हुआ है, डिस्क्रिमिनेट हुआ है। तो व्हाट ही डिड, राइट, ही ओपेंड स्कूल फॉर अनटचेबल्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही ओपेंड स्कूल फॉर untouchables. He opened school for untouchables. That is the most important thing. Opened school for untouchables. And he was the first Indian who did this. पहले इंडियन थे जिन्होंने ये काम किया, और ईयर था 1854. He opened a school for the untouchables. Not only this, what he did, okay, in 1851, Jyotiba Phule and his wife, the name of the wife was, okay, Savitri Bai Phule, Savitribai Phule. okay, they started girls school also. Savitri Bai Phule, they started what, girls school. Girls school start किया, ठीक है, पूना में they started girls school. What does this show? स्कूल खोलने का मतलब क्या है, एजुकेशन। ओके, Promotion बाय of education प्रोवाइडिंग program. एजुकेशन, right, by providing education, what can be done? By providing education, okay, the subordination can be ended. पहली चीज है जो सबसे पावरफुल है, ठीक है, वो है एजुकेशन। ठीक है, subordination can be ended. So Jyotiba Phule holds a very important place in the history of reformers in, okay, you can say that, uh, Bombay. Now another important facts, कुछ और लिखिए, right? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, तो अपना काम है पढ़ते, क्लास में ही फिनिश करते। क्यों मैं कहूँ कि कुछ और है जो बाद में पढ़ लेना, यही पढ़ लो। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपनी क्लास से आएंगे, इस बार नहीं अगली बार भी आते, हमेशा आते तो हमेशा है, बट इस बार मैं बता पा रहा हूँ कि आते हैं, नहीं तो मैं बाहर रहता हूँ, पोस्टर वोस्टर से हमेशा बाहर रहता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब आपको पता लगेगा कि आते हैं, राइट। और हाँ, एक बात और जो मैं आपको बता दूं कि एक क्लास मैंने एसए की ली थी। अब every week I will take one class of 2 hour, right? And I will discuss possibly two essays. And in 1 week you have to write two essays. एक ग्रुप भी बनाया आकाश ने, आकाश मुझे लगता है ग्रुप बना लिया आकाश ने, कल Yes, मेरे sir. पास मैसेज आया था। और जब मैं इससे डिस्कस कर लूंगा तो आपका काम क्या होगा, एसे लिखना, लिखने के बाद स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना है और ग्रुप में शेयर करना है। सब लोग ग्रुप में शेयर करोगे तो मुझे भी मिल जाएगा, ठीक है ना? गॉट इट? एक दूसरे के एस्से से सीखना है। अप्रोच तो मैं क्लास में डिस्कस कर ही दूंगा कि व्हाट विल बी द इंट्रोडक्शन, व्हाट विल बी द मेन बॉडी, व्हाट विल बी द कंक्लूजन, ठीक है ना? और स्केच डायग्राम एस्से में कैसे क्रिएट करने, ये सारी चीजें बता दूंगा। और जिसका एस्से सबसे मुझे लगेगा कि थोड़ा प्रॉब्लम है, तो पर्सनली मैं उसको डिस्कस करूंगा, उससे बात कर लूंगा कि आपको क्या इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। गॉट इट? तो यू कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। जब मैं आप लोगों से सीख सकता हूं तो आप लोग एक दूसरे से सीख ही सकते हो। सो दैट इज अ बेटर आइडिया। राइट योर एसे, शेयर इट इन योर ग्रुप। इन द सेम वे देर इज अ ग्रुप फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो, सो यू राइट आंसर, शेयर योर आंसर इन दैट ग्रुप। ओके, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द अदर्स टू। ठीक है, और यकीन मानो इससे आपको इतना बेनिफिट होगा एग्जाम में जो आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। चाहे वो इंडियन सोसाइटी, ये कुछ मॉड्यूल्स मैं आपको करा दूंगा, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स पेपर आई विल टीच यू। जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ते रहो, बट आपके मेंस के पहले तक धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके मैं ऐसे कराऊंगा, एथिक्स कराऊंगा। ठीक है, और आपके एग्जाम देने तक बहुत अच्छी आपकी कमांड हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक के एसेंस को समझना जरूरी है। हिस्ट्री हम कर ही रहे हैं, वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। और आज इवनिंग वाली जो क्लास है ना, उसमें हम हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? वर्ल्ड हिस्ट्री आज रोक के वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री 2024 क्वेश्चन, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री में कम लेक्चर्स हैं, तो वी विल मैनेज, ओके, दैट। तो टुडे वी विल डिस्कस 3 to 5 और 5:30 वी विल डिस्कस। 3 PM से स्टार्ट होगा CSC 2024 हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है ना? तो उसको ज्वाइन करिएगा।
तो उसमें आपको एक और आइडिया मिलेगा। अभी मेंस में जिन जिन थीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में दे कैन चूज दोज थीम्स या उसके आसपास के थीम्स को। जैसे पल्लवास पूछा तो आर एस शर्मा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो अगली बार राष्ट्रकूटास लिटरेचर उसमें दिया हुआ है, दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो यू ऑल्सो गेट द आइडिया कि कैसे हमने मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इन्हीं चैप्टर्स पे इन्हीं थीम्स पे जाके फोकस कर देना है कब के लिए, 2025 प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, तो उसको अटेंड करना। ठीक है ना। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट नेम, राइट दिस, बाल शास्त्री। बाल शास्त्री, द अनदर इंपॉर्टेंट नेम इज बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर, दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट नेम, बाल शास्त्री जाम्बेकर। इनका भी फोकस एरिया क्या होगा? नाउ द पॉइंट्स आर कॉमन, यू ऑल नो। ओके, बाल शास्त्री जाम्बेकर, लोअर कास्ट मूवमेंट, ओके, फाइटिंग अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास। अच्छा, और कुछ आप लिखना चाहो, सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यू आर फ्री टू राइट, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये नहीं सोचना है कि अरे और ये पॉइंट तो इसमें था ही नहीं, आपके दिमाग में जो पॉइंट है वो लिख दो। If a person is a reformer, he will deal with all the issues of socio-religious reform. Main focus कुछ हो सकता है, but he will deal with all the issues of socio-religious reforms. Okay. Now the another name is, right, Gopal Hari Deshmukh. The another important name is Gopal Hari Deshmukh, and Gopal Hari Deshmukh is also popularly known as Lok Hitwadi. This is an important information. Gopal Hari Deshmukh is popularly known as Lok Hitwadi. Okay, Lok Hitwadi. Lok Hitwadi. MG Ranade I have already discussed with you. MG Ranade की कहानी भी बताया था मैंने आपको, कुछ शायद याद आ रहा होगा पहले। The another important name is D.K. Karve. This is also an important name. Write this, D.K. Karve. D.K. Karve. और यहां से क्वेश्चन आया है तो राइट दैट पॉइंट, D.K. Karve से, राइट। ओके, हिज टास्क, तो देखो दो चीजों में है, पहला एजुकेशन, एजुकेशन फॉर द लोअर क्लास एंड एजुकेशन फॉर द वुमेन, प्लस अदर इश्यूज ऑफ रिफॉर्म। एजुकेशन प्लस अदर इश्यूज ऑफ रिफॉर्म, एजुकेशन फॉर द लोअर क्लास, एजुकेशन फॉर द वुमेन, प्लस अदर इश्यूज ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, नाउ हियर two facts are important here, write this. Okay, 1899, these two facts are the prelims question. One is 1899 and the second important work in the year 1916. These are remarkable works, right? 1899, okay, 1899, right? He set up widows home in Pune. Widows home, he set up what? Widows home at which place? In Pune. He set up widows home in Pune. Okay, widows home in Pune. ये कितना बड़ा काम है सोचो जरा। विडोज वेयर फोर्स टू लीव अ मिजरेबल लाइफ। अच्छा, कानून आने से चीजें ठीक हो जाएंगी क्या अचानक? नहीं। नहीं सर। लेजिस्लेशन विल नॉट इंप्रूव द थिंग्स ऑल ऑफ अ सडन। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बट स्टिल डिस्क्रिमिनेशन इज सीन इन द सोसाइटी। गॉट इट? ओके, so legislation will not solve the things all of a sudden. So again he is doing what? Already we have a legislation that widows have been given the right, okay, to remarry, legal right. Now what is happening here? He is giving another alternative to the widows. They can come here, they can live here, they can get training, okay, in some work, जैसे nursing or stitching, like these kind of works. They can earn their livelihood, they can live a life of self respect. यानी घर में आपके पास साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो you can come to widows home in Pune where you will live what? A life with respect and dignity. That is a Dignity. very good thing. ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, केवल कानून लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, राइट दिस। तो हियर द वुमेन कुड लिव विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हियर द वुमेन कुड लिव विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ओके, opportunities of livelihood were provided for them. Opportunities for livelihood were provided for them. दूसरी चीज, if they want to get education, okay,
So this organization will also help and support them in getting education. Got it? That is the most important point. Okay? If they want to get education, so this organization will also help and support them in getting education. अभी एक वेब सीरीज आई थी लापता लेडीज, आपने देखा भी होगा कुछ लोगों ने. उसमें देखो एक लड़की का स्ट्रगल है. सी वांट टू गेट एजुकेशन. मेरी बात समझ गया ना? कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है फॉर गेटिंग एजुकेशन. ओके. एंड उस तरह के चैलेंजेस आज भी हैं हमारी सोसाइटी में. एंड दिस इज व्हाट 1899. ये तो 19th सेंचुरी. तो क्लियर. नाउ 1916, राइट? ओके. इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी in Bombay. That is one of the most important thing. Indian Women's University in Bombay was set up by the efforts of D.K. Karve. ठीक है? Was set up by the efforts of D.K. Karve. It was set up by the efforts of D.K. Karve. Okay. These efforts are not less than revolution. ये किसी क्रांति से कम नहीं है कि अनटचेबल्स के लिए स्कूल, widow home, right? University for the women. This all is being done. And this all is being done by whom? Indians. And in India there is British rule. क्यों ये? अच्छा, एक और चीज आपने नोटिस किया, 1905, 1911, 1916, ये पीरियड क्यों है? फर्स्ट मास मूवमेंट. व्हाट इज द फर्स्ट मास मूवमेंट इन इंडिया? पहला मास स्वदेशी. मूवमेंट स्वदेशी. व्हाट स्वदेशी. इज द टाइम पीरियड? 1905 to 1905. 1907, 08. यही है. Or Swadeshi movement has an agenda. And what is that agenda? We have to Boycott. promote indigenous goods. Got it? Promote what? Boycott. Boycott करना है. Now, indigenous goods का promotion, is it only indigenous goods? Indigenous goods को कैसे promote करोगे जब तक indigenous goods को manufacture नहीं करोगे? Clear? So new enterprises will be opened where these indigenous goods will be manufactured. दूसरी चीज, why the people will use indigenous goods? If they will read in the schools that are being set up by the British, उसके अंदर वो नेशनलिज्म वाला फीलिंग आ पाएगा क्या? बताओ. नहीं. तो नेशनलिज्म की फीलिंग तो तभी आएगी ना, when you will do what? When you will read in a school, in a college which is set up by the nationalist, right? You will be familiar with the nationalist ideas. तभी तो आप, है ना, कॉस्टली इंडिजिनस प्रोडक्ट खरीद पाओगे चीपर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को रिप्लेस करके. सो व्हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस विल बूस्ट अ काइंड ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल, and they will be what? Okay, a new generation of freedom fighters will be prepared. Okay. Whenever any movement will take place, British will do what? The schools and colleges which were set up by them, they will do what? They Try will to put suppress them. restrictions on the students कि अगर तुम गए मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने तो तुमको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, तुमको कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा, तुम्हारी डिग्री नहीं दी जाएगी. ठीक है? तुमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, वो नहीं दिया जाएगा, जो आज भी चलता है कॉलेजेस में. चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती है स्कूल्स कॉलेज. ये कॉलोनियल मेंटालिटी है. ठीक है? कि कॉलेज डिसाइड करेगा कि बच्चे का चरित्र कैसा है, वो बिना लिए आपको नौकरी नहीं मिलेगी. ओके. सो what we need a nationalist system of school and college. ठीक है? That is the one of the most important thing. That's why we see a lot of development take place during this period. ठीक है? बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ होते हैं. Now right next. Okay. बहराम जी मालाबारी, very important name. बहराम जी मालाबारी. Malabari. That is an important topic. Behramji Malabari. Now, which women were in the difficult situation? Okay, the women were the women, the family is not ready to take care of the responsibility of those where can say that part of that prostitution. Okay, na? So all those women, they will get here an opportunity. Okay? They can come here, they can live here, they can live a life of dignity. Okay, so the exploited women also, they can live here a life of dignity. Now the second most important contribution Behramji Malabari was, right, this age of consent act. His contribution
in mounting pressure on the British government bring this age of consent act in 18, right? This was one that he mounted pressure on government. Okay, that is what age of consent act 18 passed by his efforts. By this age of consent act, right? This happened, right? Age of consent act. The marriage of girls below the age of 12 years was forbidden by law. Marriage of girls, marriage of girls below the age of 12 years, below the age of 12 years, forbidden by, then by, this was the thing here, that marriage of girls below age of forbidden. Got this idea? But here, UPSC has asked this question, age of consent and Ramji Mala. There is another question which was asked in UPSC. Again, that is a PYQ and that I want to, that in bringing this act or the legislation, case was very much or important, right? And we must know about that case. Okay, and right here that, okay, a case, legal case, legal case. Here is 1884 and basically 85 year. This case was very popular during this period, 1884 1888 case में case popular रहा 1885. It was a legal case and this case was Rakma by Raut by instrument. Okay, in bringing this right, uh, and what by this Rakma by Raut case, what happened? This age of consent law, the result of the age of consent is Rakma by Raut case say, right? And the second is restitute conjugal rights. This was also to well, they were one of the, you can say that, most important aspect of by Raut. ठीक है, now ये केस मैं आपको बता दूं क्या है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यू. ये केस क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. रकमाबाई, रकमाबाई राइट वाज एट दैट टाइम, पहले की बात है, 11 years old गर्ल. ओके, एंड शी वाज मैरिड टू, ओके, 19 years old, मैरिड टू 19 years old दादा भाई भिकाजी, दादा भाई भिकाजी, भिकाजी was married to 19 years old Dada Bhai Bhikaji. Okay. Now after this marriage, what happened? Bai did not went to her husband because she had to pursue studies. She will leave at her home for study, right? And she will study here under the patronage of her uncle. And now what will happen? Now Dada Bhai will file a case in the court. ये case file करेंगे. What is the case? Case is about what? Conjugal rights. Conjugal rights means what? If you are a married couple, so husband, wife, they must live together. दोनों को साथ साथ रहना चाहिए. ठीक है, डिवोर्स में अभी भी एक आधार बन जाता है कि वाइफ साथ नहीं रहती, हस्बैंड साथ. Conjugal rights. Okay, that if you are a married couple, husband and wife both should stay together. So दादा भाई will go to रुकमा भाई कि अब आप मेरे घर आओ, यहाँ पे रहो. But रुकमा भाई will say that no, I have to do further studies. Now what will happen? दादा भाई will file a case in the court. Okay, और ये केस किस चीज के मुद्दे को लेके है? दिस इज द इशू, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल. मतलब समझ गया ना? कंजुगल राइट्स का मतलब क्या है? द हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट स्टे टुगेदर. दिस इज कंजुगल राइट्स. एंड दादा भाई हैड फाइल्ड द केस फॉर व्हाट?
restitute this conjugal right, कि मेरे इस right को protect किया जाए, right? That is one of the most important point. And this case was very popular. Now Rukma Bai refused to live with Dadabai Vika. ठीक है? And the Dadabai Vikaji has filed the case for what? Restitution of conjugal rights. That Rukma Bai must live with him. Got it? Okay. Now, what will happen? This is a case that is what? Okay. Instrumental because here two issues are involved. पहली issue क्या है? India's customary practices और India's social structure, social traditions. India का social system क्या है? That the wife must stay with her husband. Got it? And what is happening? For studies, she is saying that no, I will not live with my husband. अब ये ब्रिटेन तक ये मामला है. मेरी बात समझ गया ना? गवर्नमेंट में बहुत. एंड फाइनली व्हाट द कोर्ट डिसाइडेड हियर, द कोर्ट का जो कोर्ट का ऑर्डर ये था कि रकमा बाई शुड स्टे विथ हर हस्बैंड. कोर्ट ने ये कहा कि रकमा बाई को अपने पति के साथ रहना होगा और एक जुर्माना भी लगाया. लेकिन बाद में इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लिया गया. दिस इज सेटल्ड आउट ऑफ द कोर्ट लेटर. गॉट इट? बाद में इस मामले को सेटल किया. मेरी बात समझ गए? कोर्ट से इस इशू का कोई सॉल्व. कोर्ट ने जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था उसी को देखते हुए कि रकमा बाई शुड स्टे विथ हर हस्बैंड. ओके. और उस टाइम का जुडिशियल सिस्टम डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश. ऑल नो दिस. ठीक है. तो वो भी बहुत डरते थे इंडिया का जो भी सिस्टम था उसमें इंटरफेयर करने से. बट इसका एक इम्पैक्ट ये हुआ दैट इन 1891 बाय द एफर्ट्स ऑफ बहराम जी मालाबारी एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस. कि 12 इयर्स या उससे कम बच्चों की शादी नहीं. दिस केस वाज इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. दादाबाई बीकाजी केस वाज, सॉरी, रकमाबाई केस वाज. नाउ द क्वेश्चन इन द यूपीएससी वाज, राइट दिस क्वेश्चन in the context of Indian history. This question is very important. Write this question. In the context of Indian history. This is the question. The context of Indian history. इस question को यहीं लिख लो. In the context of Indian history. The Rakmabai case of 1884. The Rakmabai case. The Rakmabai case 1884. Rakmabai case of 1884. Okay. 85 भी लिखा रहता है. It's not wrong. 1884 revolved around. It revolved around रकमाबाई केस. Revolved. कौन कौन सॉल्व थे रकमाबाई केस में? तो राइट पॉइंट 1. ओके. वुमेन्स राइट टू गेन एन एजुकेशन. वुमेन्स राइट गेन एन एजुकेशन. द सेकेंड इज एज ऑफ कंसेंट. एज ऑफ कंसेंट. And the third is, right, age of consent and restitution of conjugal rights. Restitution of conjugal. इस केस का सबसे ज्यादा फोकस किन बातों पे बताओ? एजुकेशन पे फोकस था या कंसेंट और रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स? किससे रिलेटेड? एग्जैक्टली. दिस वाज द मेन फोकस. कंसेंट एंड restitution conjugal right. This case is related to this part. Okay. So that is the Rakmabai case. Okay, so this is a trend followed by UPSC that once a question has been asked, they will explore the same area. For example, Age of Consent Act and Bahramji Malabari has been asked multiple times. They explored the same area, that which case was instrumental. In the same way, this year in GS May from Art and Culture, the that have been asked Pallavas, Kulas, or Vedic period. This gives us a hint that for 2025 prelims, we must know, for example, NCERT का chapter है Pallava, there is Rashtrakuta also, right? There are other regional powers in South India. तो सबके बारे में पढ़ के जाओ, right? The idea कि कैसे हमें क्वेश्चन पकड़ना है. In this way we can get some question. ये बात आप समझ गए? बहराम जी मलाबारी is one of the most important reformer. Now we are coming to the next part. Okay. The next is when you will prepare questions from this part, na, PYQs. So generally what you have to do, just leave 1 or 2 pages and whatever the questions have been asked in PYQs, okay, in bullet form make a list of those questions and the informations and read those again and again. Whenever the question will be repeated, you can get questions that part itself.
The concept you already understand, and whatever the facts and information that have been previously asked, you can use the same. Okay, and you can solve the questions that will be asked, okay, in 2025 2000. बहुत ज़्यादा भागना नहीं, पहले के PYQs हैं के फैक्ट्स को कलेक्ट कर लो प्लस कॉन्सेप्ट को समझो, देन यू कैन इजिली, ठीक है ना, यू कैन प्रेडिक्ट द आंसर ऑफ द दैट विल बी asked. Now the third part is, okay, South India. At this South India, South India, this part also I have discussed one basic point, that in South India what will be the most important or the focused area or the program. सबसे ज़्यादा फोकस्ड क्या होगा यहाँ, अगेन प्रीवियस बॉम्बे में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है लोअर कास्ट मूवमेंट, राइट, दिस लोअर कास्ट मूवमेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इशू, लोअर कास्ट मूवमेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एजेंडा इन साउथ इंडिया, लोअर कास्ट मूवमेंट, ठीक है, हमेशा याद रखना है। और इसके पीछे रीजन क्या है, फॉर दिस यू नीड टू रीड एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडियन, तब आप समझ पाओगे, ठीक है, कि हाउ ब्राह्मणिज्म, ओके, ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स एंटर्ड फ्रॉम नॉर्थ साउथ, दक्कन, सातवाहनास, पल्लवास, कैसे ये दक्कन में जाता है, ओके, हाउ द सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट स्टार्टेड इन दक्कन एंड हाउ ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द दक्कन रीजन। एक टाइम आता है कि दक्कन में व्हाट हैपेंस, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी इज एस्टैब्लिश्ड, गॉट इट, ओके, and what will happen when Brahmanical supremacy is established? Obviously we will see what, that the discrimination with the lower caste started. South India की एक और खास बात है, this structure Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, which two were the more clearly visible, these two are the more, Brahman and Shudra, right, this social structure is clearly visible. जैसे नॉर्थ में BKVS, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इज विजिबल, इन साउथ ब्राह्मणा एंड शूद्र, this social structure is visible, and in this social structure what we see here, dominance of priestly class or the Brahmins and subordination of, and that's why this is the main issue, dominance of priestly class and subordination, clear, dominance of priestly class and this is the main issue here, plus we can relate other issues as, दूसरे इशू भी आ सकते हैं, like we all know that other issues of reforms, but this is the most focused area here, okay. And one topic I have already discussed with you, that activities of Brahma Samaj, okay, will get extension in the South India under the leadership of, what was the name, K. Veer Salingam, okay, बताया था ना आप, so read this, Brahma Samaj activities, Brahma Samaj activities, Brahma Samaj activities, Brahma Samaj activities, okay, they are also extended, or the Brahmos were also extended South India, Brahma Samaj activities or the Brahmos were also extended in South India under the leadership of K. Veer Salingam, under the leadership of K. Salingam, under the leadership of K. Veer. This is the important person. It means the extension of Brahmos or Brahma Samaj activities in South India is under the leadership of K. Veer Salingam. See, widow remarriage issue, female education, this issue, got it? Issues that are related to general upliftment of women, issues that are related to upliftment of Shudra class in the society, all these issues raised by K. Veer Salingam. ठीक है, ये कॉमन बात है, इसको हम आसानी से गेस कर सकते हैं, that widow remarriage, right, and upliftment of women, upliftment of Shudra, all issues with, और ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलना, साउथ इंडिया में क्या है, this four varna social structure में से which two structure are more clearly visible, and this is the reason that the main focus in South India religious reform is on what, ठीक है ना, जैसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट वगैरह ये सब कहाँ देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में ही देखता है, एंड दिस इज द रीजन, that is the most important reason, got it? Now next point right here, in South India
Another movement is very famous. One तो आपने समझ लिया, okay? K. Selingam. Now the next is Theosophical Society. Theosophical. Theosophical Society is one of the most important topic for your prelims exam. And always remember, दो तीन फैक्ट हमेशा याद रखने. आर्य समाज movement, what is the year? 1870. Theosophical Society, what is the year? 1875. Aligarh movement, what is the year? 1870. ये एक important topic है, Theosophical Society, right? 1875. Now, who was the founder? Most important point. Read this founder. There are two names that are most important. One is, right, Madam Blavatsky and Colonel Madam Blavatsky. Clear? The second is Colonel Henry Alcott. Colonel Alcott. There are two important names, Blavatsky and, right? And this society, it was founded in USA by these Blavatsky and Alcott in 1875. And later, okay, the society shifted its headquarters in Madras. Later, the headquarters of this society was shifted to Madras. The name of the place in Madras was, the headquarters of this society was shifted. Now the center for its activities are Madras, South India. Got it? The year was 1882. जब ये shift हुआ, what is the year? 1880. So it started in 1875 and the headquarters was shifted in South India, Madras, in which year? 1882. The headquarters was shifted in the South India, Madras. Got it? Now, what is its main task or the agenda? This we need to understand. Read this. What was the main task or what was the agenda? Main task or agenda? What was the main task or agenda? देखो, theosophist. Theosophist means what? Again, the main task or agenda is, theosophist task is rediscover India's ancient past, Asia's ancient, rediscover, okay, Indian traditions, Indian philosophical traditions, Indian history. ठीक है. अच्छा, इसका फायदा किसको मिलेगा? Obviously Indians को. We will be able to know about our history, about our culture, and this will promote a kind of self-respect in the mind of the Indians. Very simple. Okay, so read this. The task of task. इनका task क्या था? Task of those office. Okay, what was the task? Read this. The tasks were related to Orientalism, Orientalistic efforts. A word we use, that is what? Orientalistic. This is the task of Orientalistic. And what are these Orientalistic efforts? तो अगर आप simplify कर दो, all know the meaning of this Orientalistic effort. Right, point one. Discover India's ancient past, particular, and Asia's ancient past in rediscover India's ancient past, particular, and Asia's ancient past in rediscover India's ancient past. Obviously, you will discover Indian philosophical tradition, right? Indians religious tradition, that is Ved, Quran, Upanishad. This rediscover, right? Obviously, you discover India's ancient past, India's religious tradition, Ved, Puran, Upanishad. ठीक है, यही तो rediscover करोगे. अगर rediscover, got it? Okay. Then you will rediscover what? Okay. This all will do what? All these efforts, right, will promote the feeling, right?
and pride, self pride, all this thing of self respect and pride. Indians में इससे आएगा self respect obviously. Okay, these efforts be, okay, can say that these efforts praise in efforts tarif ki their efforts will be right. Now the next important point, one important person joins this organization, okay, in 1889. The name of that important person or present, देखो 1882 में, देखो ये याद रखना, 1875 it was founded, 1885 1882 the headquarter shifted to South India, Madras, founded where in USA, ध्यान रखना प्रीलिम्स में ये टेक्निकल बात है. And in 1889 any Besant this 1889 Besant 1889 philosophical, ठीक है, got it. Now made Theosophical Society popular in India, the answer is any Besant. थियोसॉफिकल सोसाइटी को इंडिया में पॉपुलर किसने बनाया? एनी बेसेंट. राइट दिस, एनी बेसेंट मेड थियोसॉफिकल सोसाइटी पॉपुलर इन इंडिया, पॉपुलर इन, एनी बेसेंट मेड थियोसॉफिकल सोसाइटी पॉपुलर. देखो प्रीलिम्स का एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन, प्रीलिम्स इट इज ऑफन आस्क्ड दैट द स्टेटमेंट रीड्स लाइक दिस, ज्यादातर एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट लिखता है that any Besant was the founder of Theosophical Society. Will it be correct or incorrect? हमेशा ध्यान रखें, एनी बेसेंट इज नॉट द फाउंडर. कुछ क्वेश्चन तो बहुत फेमस है जो देते हैं, एनी बेसेंट इज नॉट द फाउंडर, एनी बेसेंट पॉपुलराइज्ड इट. ठीक है, अच्छा बताओ, आप अगर इंडिया के एनसीए रिलीजन पे काम कर रहे हो, 1893 में जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स शिकागो में होगा, जहां स्वामी विवेकानंद गए थे, क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी इनविटेशन कार्ड आएगा? यस, क्योंकि वहां उसी पे तो बात करनी थी, रिलीजन और फिलोसफिकल ट्रेडिशंस. तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव बन के कौन जाती है वहां? नहीं बेसेंट. दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट हियर, दैट 1893 पार्लियामेंट ऑफ ऑल रिलीजन हेल्ड इन शिकागो. वी ऑल नो दिस, पढ़ा भी था हमने, पार्लियामेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स दैट वाज हेल्ड इन शिकागो. read this, Philosophical Society was presented by any Besant. Philosophical Society was represented by any Besant. ठीक है, Philosophical represented by Besant. चीजें एक साथ हो रही, पहला थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट पॉपुलर बना रही है, और एनी बेसेंट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से पॉपुलर हो. गॉट इट? दिस ऑर्गेनाइजेशन was popularized by Annie Besant and Annie Besant became popular due to this organization. अच्छा बताओ, अब एनी बेसेंट की रेस्पेक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस में होगी, बिकॉज यू आर exploring what, or you are just glorifying India's cultural practices. And now Annie Besant joins Indian Nation, and Annie Besant, okay, Annie Besant becomes a popular leader in, Annie Besant becomes a popular leader in INC. And most importantly, what happens in 1898? In 1898, led the foundation of, okay, college in Banaras. It was school and college, that is called Central Hindus, 1898 in Banaras. Later it became Central Hindus and College, and the same developed in BHU. यही आगे चल के किस डेवलप होता है? BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1960. मदन मोहन मालवीय led the foundation of Banaras Hindu. मदन मोहन मालवीय led the foundation BHU. Here CHS का डेवलपमेंट किस में हो रहा है? BHU में. The foundation was led by Annie Besant. Okay, got it? That is one of the most important. Okay,
It becomes very popular in Indian national. Now, the next important thing. एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना है दैट व्हेन आई विल टीच यू नेशनल मूवमेंट रिलेट करके पढ़ाऊंगा. देखो क्या है स्वदेशी मूवमेंट. राइट दिस, यहाँ लिख लो स्वदेशी मूवमेंट. द टाइम पीरियड वाज 1905 1907. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ, दिस वाज व्हाट, फर्स्ट मास मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट वाज फर्स्ट मास मूवमेंट. फिर क्या होता है राइट हियर 1906 there is another event that is called Surat 1906 Surat split. Surat split में क्या होता है, moderates extremist split. ये split किसकी, moderates and moderates INC में रह जाते हैं and now extremists are out of Indian national. यहाँ पे extremists they are out from Indian national Congress. This is called split. It took place in, ठीक है ना. और उसके बाद एक दूसरा इवेंट है, रेड दिस 19 this is called Lucknow Pact. This event is called Pact because here we see what, moderates and extremists, the pact between moderates and, read this, Lucknow Pact, the pact between moderates got it, Lucknow Pact, the pact between moderates and the extremists, that is Lucknow Pact. किसके एफर्ट से, ओके, और भी उसमें एक दो मीडिएटर्स है, बट राइट दिस, ओके, in this, राइट दिस, Annie Besant played an important role in this pact. Annie Besant played important role in this pact. Annie Besant played important role in this pact, and in this way, Annie Besant played an important role in this pact, and in this way became one of the most popular leader in Indian National Congress. He became one of the most popular leader in national, one of the most in national. जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही तो है ना. और एक और पॉइंट, नाउ हिज रोल इज रिकॉग्नाइज्ड in 1917, right, in 1917 INC was held in Calcutta. 1917 INC was held in Calcutta, okay, and Annie Besant was made INC president. Annie Besant was INC president here, okay. Session was held in Calcutta. Annie Besant was INC president here. Session held in Calcutta and Annie Besant was INC president. And what is the next important fact? Annie Besant was the first women president of Indian nation. But if the question will ask that who was the first Indian women president, what will be the answer? Exactly. ध्यान रखना है. Write this, that Annie Besant was the, highlight this, first women president of INC. We are not saying first Indian women. We are saying what? First women president of Indian National Congress. That is one of the. Annie Besant was first women president of Indian National Congress. First women president of Indian National Congress. Got it? One of the most important. Okay. Clear? तो ये हो गया आपका साउथ इंडिया भी क्लियर हो गया. राइट, सम अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, some other important, make a list of, for example, Dharm Sabha. All know about this. Dharm Sabha पहले बता चुका हूँ. धर्म सभा कब बनी थी? I have already discussed it with you. 1830. Okay. And who was the founder? राधाकांत देव. याद आया? ब्रह्म सभा 1828 और धर्म सभा. हाँ, good. राधाकांत देव was the founder.
राधाकांत देव वॉज द फाउंडर। पर्पस क्या इसका था? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू, मेंटेन स्टेटस क्यू, जैसा है वैसा बने रहने दो। ब्रिटिश हैज नॉट द राइट टू इंटरफेयर इन द सोशल कस्टम्स प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियंस। ठीक है, इफ कस्टम ऑफ सती इज देयर, ब्रिटिश डोंट हैव द राइट टू इंटरफेयर। करना होगा हम करेंगे, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। गॉट इट? बट व्हाट इज द मोस्ट यूनिक थिंग? दैट this is a group of orthodox Indians, but still they are supporting or favoring what? That is the most important that I've already discussed with. Right, next important point is Ved Samaj. That is also very important. Ved Samaj. The year is 1864. 1864. Ved Samaj. Okay, right. Keshav Chandra Sen plus, okay, Keshav Chandra Sen plus, okay, K.S. Naidu. Keshav Chandra Sen plus K.S. Naidu. Year is 1864. Year is 1864. And right, organization in Madras of South India. Ved Samaj, important organization in Madras and South India. Madras and South India. Got it? अब इसमें कौन जुड़ा हुआ है? केशव चंद्र सेन, एंड केशव चंद्र सेन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद ब्रह्म समाज ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे इशू क्या होगा? विच इशू बी रेज्ड बाय वेद समाज? सेम इश्यूज, सेम इश्यूज। अगर क्वेश्चन आ जाए वेद समाज पे, विल राइट द सेम आंसर। So this is also known as, right, Brahma Samaj of South India. This is also known as Brahma Samaj of South India. This is also Brahma South India. Brahma Samaj of South India. Got it? This is also known as Brahma Samaj of South India. Now we are familiar with Hindu Society Reform. अब तो कुछ हमें पता ही होगा ना, Hindu Society Reforms in Bengal, in Bombay, in Madras. Got it? क्या देख लिया? रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन we have also discussed, and we all also discuss what are the issues. Now what you will do, leave 1 or 2 pages and collect all the facts related to this fact, क्योंकि मेंस रिलेटेड अब कोई भी आएगा तो गलत नहीं होगा आपका। आपको मैंने बहुत सारे डायमेंशन बता दिए, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑफ डायमेंशन। नाउ द सेकंड पार्ट इज, राइट, रिफॉर्म्स इन मुस्लिम सोसाइटी। दिस वी नीड अंडरस्टैंड, दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। रिफॉर्म्स इन मुस्लिम सोसाइटी, here reforms in that we need to, here we see streams, reforms in society, and which are these two streams? Clear? One is revivalist movement. The one is what? Revivalist, and the second is reformist. Revivalist, reformist. Clear? We need to understand the definition revivalist movement and reformist. So देखो, what is the objective here? When we talk about revivalist movement, what these revivalist movements tends to, or what is their objective? तो देखो, यहाँ revivalist movement का objective हो जाएगा, for example, if Hindus will look towards their glorious past, कहाँ चले जाएंगे? Ancient India वाले मॉड्यूल। If Muslims will look their glorious past, तो उनको किस हिस्ट्री में देखना पड़ेगा? मिडिवल इंडिया में, राइट? So revivalist movement means what? Orientation towards the glorious past, the same like Hindus. So here at this, revivalist movements means, revivalism here means what? Read this, okay, orientation, yes, past of, yes, past of Muslim. They will look backward here, backward, पहले जाके देखेंगे, okay, yes, past, right? और जब ये ग्लोरियस पास्ट की तरफ देख लेंगे मुस्लिम सोसाइटी, प्रोग्रेस होगा या और गलत रास्ते पे चले जाएंगे? ठीक है,
तो देखो ग्लोरियस पास्ट में क्या होगा, राइट? पॉइंट वन, व्हेन दे लुक टुवर्ड्स द ग्लोरियस पास्ट, पॉइंट वन क्या है? दे वांट re-establish the original form of Islam. Okay, read this. Re-establish the original form or to purify Islam. This is the objective here. Stabilize, to re-stabilize original, और यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म का एक और नाम देते हैं प्यूरिफाई, प्यूरिफाई इस्लाम, प्यूरिफाई इस्लाम। बट ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसकी बाद में कौन आके समझाएगा? सर सैयद अहमद खान, राइट? So here they are trying to, okay, accept Islamic principles and beliefs as it is. They don't want any changes. Okay, so they want to accept the principles and beliefs as it is. Principles and belief as it is. Changes में कोई बदलाव इनको नहीं चाहिए. Okay, they will look towards Arabia. ठीक है, प्रॉफिट रूल और इन सारी चीजों से देखेंगे, और जैसे ही जोड़ के देखेंगे तो क्या चीजें इन्हें नजर आएगी? पहली चीज, ठीक है, that we have to convert Darul Harb into Darul Islam. We have to convert the land of non-believers of Islam into the believers of Islam. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? We have to preach our, मतलब एक मिशनरी zeal था इस्लाम रिलीजन में. In Christianity also there was a missionary zeal. In Buddhism also there was a missionary zeal. But Hinduism में वो missionary zeal कभी नहीं रहा. आपने कभी सुना है कि हिंदू मिशनरीज, बुद्धिस्ट मिशनरी, Christian missionary, right? There are efforts for the promotion of Islam, but not for the promotion of Hinduism. Hinduism is not a missionary religion. Buddhism is, Christianity is, Islam is. तो इनका एफर्ट क्या होगा? Convert Darul Harb into Darul Islam. अच्छा, there are two meanings of this. There are different organizations here, and some organizations the second meaning. देखो, Darul Harb into Darul Islam also means what? Okay, एक दो जगहों पे इसका मतलब ये भी है कि फाइटिंग विद द ब्रिटिश रूल, क्लियर? बट स्टैटिक मीनिंग भी है, डायनेमिक मीनिंग भी है. सो राइट पॉइंट वन, कन्वर्टिंग दारुल हर्ब इनटू दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब इनटू दारुल इस्लाम. दारुल हर्ब मीन्स बिलीवर्स ऑफ इस्लाम, नॉन बिलीवर्स ऑफ इस्लाम, लैंड ऑफ नॉन बिलीवर्स ऑफ इस्लाम. ओके, एंड दारुल इस्लाम मीन्स लैंड ऑफ बिलीवर्स ऑफ इस्लाम. एक तो ये हो गया. दूसरा क्या होगा बताओ? सबऑर्डिनेशन ऑफ women. Will they support giving education to the women? Giving Western education to the women? ठीक है, read this. Okay, okay, did not support giving Western education to, ये भी होगा, they did not support giving Western education to the women, did not support giving Western. And what is the third point here? Okay, will they support progressive interpretations of कुरान और इस्लामिक टीचिंग्स? ठीक है, अपने हिसाब से आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करना है. और जब आप प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे, ओके, द society that is based on the religion will not make progress. Okay, you can write also here the third point, right? They did not believe in the reinterpretation. They did not believe in the reinterpretation of, they did not believe the reinterpretation of teachings of Quran and Hadith. They did not believe in the reinterpretation of teachings of Quran and Hadith. It means they want to accept the pure teachings of Quran and Hadith. जैसा लिखा है वैसा ही accept करना, right? It means accepting the pure teachings of Quran and Hadith. It means they are focusing on what? Traditional Islamic learning. Got it? Accepting the pure teachings of Quran and Hadith means accepting traditional Islamic learning. Accepting traditional Islamic learning. Okay. Now you tell me one thing, that these kind of movements will do what?
Will they make the Muslim society progressive? Yes or no? और पीछे लेके जाएंगे. For example, here one example is right, Deoband school. देवबंद school. This is one. देवबंद school. अच्छा देखो, रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो प्रोग्रेसिव भी. देवबंद स्कूल, दिस इज आल्सो नोन एज दारुल देवबंद 1860. राइट दिस, दारुल देवबंद. देवबंद ईयर इज 18. दिस इज रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दारुल उलूम देवबंद. और देवबंद, दारुल उलूम देवबंद. गॉट इट? नाउ अहमदिया मूवमेंट. अहमदिया मूवमेंट. अहमदिया अहमदिया मूवमेंट 1889 पंजाब रीजन. ओके, 1889 पंजाब रीजन. अहमदिया मूवमेंट पंजाब रीजन. ठीक है ना? यहां लिख लेना. दिस इज कैन से राइट दिस. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन लिबरल प्रिंसिपल कंपेरेटिव टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन. ये लिबरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड अहमदिया. ठीक है, लिबरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड. अहमदिया को या अलग कर दो, अहमदिया को मत लिखो इसको. लिबरल प्रिंसिपल बेस्ड था. देवबंद दारुल उलूम, दिस इज वन दैट यू कैन राइट. वहाबी वलीउल्लाह लिख लो. यहाँ एक और लिख लो, वहाबी वलीउल्लाह मूवमेंट. वहाबी और वलीउल्लाह मूवमेंट. वलीउल्लाह, वहाबी और वलीउल्लाह मूवमेंट. ये रहा है 1830s टू 18. वहाबी और वलीउल्लाह मूवमेंट. ठीक है ना? वहाबी और वलीउल्लाह मूवमेंट. राइट, गॉट इट? राइट. अहमदिया में देर इज सम लिबरल एलिमेंट. आई विल डिस्कस दैट कि क्या है. अब देखो द सेकेंड पार्ट, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट. व्हेन आई विल डिस्कस इन डिटेल यू विल बी एबल टू. Okay, now the third is reformist movement. You already know the definition. Am I audible, Vipin? You already know the definition of reformist movement. क्या है definition of reformist movement? The movement that intends to bring reform in the fundamental structure of religion and society. And here we are talking about which religion, which society? Islam religion, Islam society. Read this. Okay, the movement which tends to bring changes. The movement which tends to bring changes in the fundamental structure or existing structure. The movement which tends to bring changes in the fundamental structure or existing structure, fundamental structure and existing structure, fundamental structure and exist Muslim society and religion. Muslim society, okay, Muslim society, that is called reformist. Okay, and right here the most important example of this movement is Aligarh movement. ठीक है ना? Ali, exactly. The most important example here is Aligarh movement. 1885 was associated with this movement. Answer is Sir Syed Ahmad Khan. Aligarh movement and Sir Syed Ahmad Khan. Aligarh movement, Sir Syed Ahmad Khan. He was associated with this. Aligarh movement and Sir Syed Ahmad. Clear? Now, we need to discuss in detail these. Wahhabi क्या था, वलीउल्लाह क्या था, right? Aligarh movement, of Sir Syed Ahmad. And if we will discuss in detail, then we will be able to understand the British policy and rule. Topic को भी skip नहीं करने वाले हैं. We are going to discuss in detail about each and every revivalist organization, the founders, okay, what was their mission and objective. We will also discuss Sir Syed Ahmad Khan, and here we are going to discuss in detail that what was the outlook of Sir Syed. हम इसको भी discuss करें. Got it? We will also discuss that is it justified or is it proper to say Sir Syed Ahmad Khan a communist? क्या Sir Syed Ahmad Khan को हम communist कह सकते हैं?
या नहीं कह सकते? दिस इज अ डिबेट, विल आल्सो डिस्कस, राइट, दैट वी शुड call Sir Syed Ahmad Khan a communalist or not, right? Discuss each and everything. This topic is very much important. And now, when you look at the question, PSC, you will find that the question requires a good understanding. ऐसा नहीं है कि आपने एक नोट रट लिया और उससे when you look carefully, and that all questions require good understanding of the theme. Clear? And this will not happen all of a sudden. And this will not happen if you will follow a program that finishes in India in 20 days, 40 hours, 35 hours. तो इससे कुछ नहीं, आपको बार बार मॉडर्न इंडिया पढ़ना, ठीक है? टीचर बदलते रहेंगे, आप हमेशा स्टूडेंट सेम रहेंगे, बार बार पता चले मॉडर्न इंडिया, ठीक है? इससे तो फायदा है ना, ठीक है? आप 3-4 टीचर से पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया में, मेरे जैसे टीचर से पढ़ लोगे तो दोबारा नहीं पढ़, दोबारा मुझे, राइट, बिकॉज विल नो एवरीथिंग इन डिटेल. So I will discuss this topic in the next class, but right now this is your task. I am already including all the prelims facts here, but क्या करना है, prelims question bank लेके questions को solve करना है, ठीक है ना, explanations पढ़ना है, and you have to update facts, बस इतना करते चलो, ठीक है? अगर हमने इसके बाद जब आर्ट एंड कल्चर हम स्टार्ट करेंगे, आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन 15 to 18 क्वेश्चन प्रीलिम्स. अगर इतने भी मैंने कर दिए, बहुत है ना. इन प्रीलिम्स इफ आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट 15 to 18 क्वेश्चन, 15 मान लो, टोटल 50 है, तो रीडिंग पॉलिटी और बाकी सारी चीज़ें पढ़ी रहो, 18 अगर मेरी क्लास से कवर हो रहा है प्रीलिम्स में, दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट. Got it? In GS, if you are able to cover, right, in history, 70 to 80 marks, that is also a good. Because what you are learning in history, you are going to use in other areas of GS. ऐसे में भी यूज होगा, मैंने बताया था रेनेसा मैन कैसे था इंडस्ट्री से, ठीक है? तो ओवरऑल आप देखो प्रोडक्टिविटी तो रहेगी ना, ठीक है, बट इसके लिए जल्दबाजी नहीं, राइट, विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन. So for just for now, practice PYQs, and in the second half, that is 3:30 से होता था, बट टुडे आई विल स्टार्ट एट 3 PM, ठीक है? थोड़ा लंबा खिंच जाता है और एक क्लास मुझे और लेनी होती है. आई विल डिस्कस दिस 2024 क्वेश्चन. वाई देर इज अ पर्पज दैट इफ यू डिस्कस द थीम, वो थीम आपके दिमाग में बैठेगा और उस थीम पे थोड़ा और काम करोगे, उसका फायदा आपको चांसेस है कि कहाँ मिल सकता है, 2025 प्रीलिम्स में. ओके, for that purpose I will discuss, or when I will get time I will also discuss Indian society social justice question. I will also discuss with you ethics paper, पूरा ethics paper भी discuss करेंगे, और essay writing program हमारा continue रहा है from this weekend, ठीक है ना? That will be, we will take 2 essays, well 2 essays in 1 week, okay, and this will be continued, a continuance. Got it? Essay writing program will be in continuance because this is the most appropriate time for essay writing preparation, ठीक है? एंड वी विल नॉट डू डेली, डेली से कोई खास फायदा आपको होगा नहीं, बिकॉज इन 1 week इफ यू विल प्रिपेयर 2 themes, कैन डू होमवर्क ऑन दोज, ओके, और उसका आइडिया आपको ठीक ठाक हो जाएगा. आइडिया को आप यूज कर सकते हो दूसरे हिस्से में. देर आर सो मेनी एसेज वेर यू फाइंड दैट द कंटेंट्स विल बी द सेम कंटेंट, ठीक है ना? ये मैं बताऊंगा जब ऐसे मैं आपके साथ डिस्कस करने लगूंगा, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट द कंटेंट विच आई एम डिस्कसिंग इज बीइंग रिपीटेड. वो रिपीटेशन वाला एलिमेंट आपको दिखने लगेगा. एसे का टाइटल अलग है, थीम अलग है, बट वी आर यूजिंग एंड यूटिलाइजिंग सम कोर कॉन्सेप्ट्स एवरीवेयर, और वी हैव टू नीड लर्न दैट कि वो कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है जिसको हम किसी भी हिस्से में अप्लाई कर लेते हैं. वही है अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? और उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, तो दिस विल, ओके. So till now practice PYQs, okay, and today in the evening session we are going to discuss history, okay. चलिए, thanks to all of you. कोई question है? Any one of you have any question? Please ask. PH odd ना, odd state. At that time when British were ruling India, तो कल मेरे एक दोस्त बैठे थे, तो he is working on of revolt of 18, he is a writer. उनके साथ मैं बैठा था, तो I was looking at some of the collect library Calcutta and etc. So I thought that how British were writing, कानपुर को कैसे लिखा है,
जैसे वो प्रोनाउंस करेंगे। कानपुर है, AONPRE, ठीक है। ओके, OUD, औडे, OUDE भी लिखा है औद को, राइट। OUDH अवध, गुड। ओके, OUDH अवध स्टेट। अवध स्टेट ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, राइट। ये हमारा वर्जन है, इंडियन वाला वर्जन। ब्रिटिश विल से आउट। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।